Professor, and whenever we need him for HRDC, it is his commitment and dedication that he always gives us time. He is the chairman of the Department of Computer Science right now. He has published many research papers in good journals, and he has also presented a good number of papers in various national and international seminars. He is very sought after resource person. He is regularly invited by different HRDC centers of our country, and he is regular resource person for our HRDC center, AMU. And he is also looking after the work of Indira Gandhi National Open University, and many courses he has introduced in AMU also, AMU branch also, which is there in AMU campus, IGNOU's branch. No, sir. When participants, I can give you the guarantee that when you will attend his session, you will enjoy and you will learn a lot. This is his beauty, and he is a very down-to-earth person. We are fortunate that sir is with us today, and sir has given us time despite his busy schedule. Sir, thank you very much for giving us time, consent for this session. Sir will deliver his lecture on technology integration at higher level, which is very, very important for NEP implementation. And during Corona, sir's lectures on Google Classrooms has helped us. Us means the whole AMU fraternity in switching over to from offline to online classrooms learnings and classroom teachings. Sir was and sir is instrumental in changing the atmosphere of Aligarh Muslim University. He has given training for online teaching and learning in Aligarh Muslim University, especially during Corona. And since then, he has continued training teachers, and around innumerable teachers he has trained in his life in ICT. Thank you, sir. Once again, sir will deliver his lecture on technology integration at higher level. Sir, all is yours. Thank you, Dr. Shakir. Am I audible, participants? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, very good morning to all of you. And today, I'll be discussing with you the technology integration in higher education with respect to NEP 2020. So today we will try to cover the following topics. First of all, we'll see what is the mandate of NEP 2020, or what is the main objectives of NEP 2020. After that, we will see how we can achieve these objectives. And while we are trying to achieve these objectives, our main focus or emphasis will be on how the technology can help in achieving these desired objectives. So basically, we will be discussing technology use or integration of technology in higher education so that we can effectively achieve the objectives of NEP 2020. So these are the topics which we will try to discuss with you during 1.5 hour session today. Just to start with, we will see what is the overview of NEP 2020. NEP 2020 is a very ambitious document which has the potential to change the existing you can say the situation of the higher education, or not higher education, but the whole education of the country, starting from school level, primary level, to secondary level, to higher level. And this document tells you each and everything, how we can proceed further, what are the objectives of NEP 2020, and how we can bring our education system at par with the world education system, so that it becomes at par with the high quality education system which is being imparted worldwide. In the very beginning, NEP says that education is fundamental for achieving full human potential, developing an equitable and just society, and promoting national development. That is the fundamental prima facie of the NEP 2020 document. The main thing which NEP emphasizes is that providing universal access to quality education is the key to India's continued action and leadership on the global stage in terms of economic growth, social justice and equality, scientific advancement, national integration, and cultural preservations. So if you want to summarize the objectives of the NEP 2020, we can say that the main focus is to provide universal access to quality education to each and every individual of the country. Universal high quality education is the best way forward
for developing and maximizing our country's rich talent and resources for good of the individual, the society, the country, and the world. And as you know, India is having highest population of young people in the world over the next decade, and our ability to provide high quality educational opportunity to them will determine the future of our country. So it has been the very beginning of the document, it has been identified that our main focus should be to train and educate our young people or young population so that they can compete with the world level competition, and to maximize the growth of, or they can contribute to maximizing the growth of our country. Okay, so I have already told you that it's a very ambitious document, and it plans a lot of things, sets a lot of objectives, but who will bring this change? And I have already told that it's going to change the educational scenario of the country, but who will bring the change? So NEP document identifies that it is the teacher who is at the center of fundamental reforms in the education system. So NEP document admits that this kind of change can only be possible, can only be brought with the help of the teachers. So teachers are at the fulcrum of all these activities. These are the center of all these activities. So teacher and faculty as the heart of learning process. So how we will bring the change? The new education policy must help re-establish teachers at all levels as the most respected and essential member of our society, because they truly shape our next generation of the citizens. So this has been identified and it is written in the very clear terms in the NEP document. And that is why the government is, or Ministry of Education is trying to train our teachers in such a way so that they can contribute in maximizing the economic growth of the country or in implementing the NEP 2020 document. So it has been identified that we must do everything to empower teachers and help them to do their job as effective as possible. So, and that is the reason why we are conducting a lot of training programs over there, so that our teachers get trained in various aspects of the education. Today, as far as I am concerned, I'll be talking about how the technology can help in bringing all these things. And if the technology can help in bringing all these changes, it can be as an enabler of the change. Then the teacher must also be aware with all these technologies. What are these technology? And they should be in phases. They should be trained in these technology as well. So that is the point over here. So I have already discussed, and now we can summarize the things over here, that NEP 2020 emphasizes on promoting multidisciplinary and holistic education. It emphasizes on vocational education. Another emphasis is on providing quality academic research. NEP document give more emphasis on adult education and lifelong learning. Online and digital education has been a great enabler in bringing all these change. Another phenomenon is internationalization of our education system and achieving global standards of quality. So whenever we're talking about education, our education system should be at par with the world level quality education system. So these are basically the emphasis which has been led by NEP documents. I am not going to discuss this multidisciplinary holistic education. What do you mean by vocational education? But very briefly, you can see that as far as the multidisciplinary is concerned, we should not train our young people or train our students particularly in one discipline. They should be trained in such a way that they should have the knowledge of various disciplines or various walks of life, so that they can understand the problem of the society as a whole and they can contribute to in solving the problem. So while we see the whole country or society as a whole, there may be n number of problems. There may be psychological problem, there may be scientific problem, there may be some social problem. So they should be educated in such a way that they can understand these different parameters or these different aspects of the society, and as a whole they can contribute in providing a solution for the problems which occur in our society. That is the meaning of multidisciplinary. That's why you might have seen कि हायर एजुकेशन सिस्टम में अभी जो आपने एनईपी कहीं लागू किया हुआ बहुत से कॉलेजेस में, तो आप देख रहे होंगे कि जहां पर बीएससी में लड़का फिजिक्स पढ़ रहा है, साथ साथ आप उसको माइनर में
एज ए माइनर सब्जेक्ट या जेनेरिक सब्जेक्ट में बोलते हैं साइकोलॉजी भी ले सकते हैं आप, लैंग्वेज भी पढ़ सकते हैं आप, सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते हैं आप, है ना. सो these are basically the ways to introduce multidisciplinarity in the higher education. Another thing is that holistic education. What do you mean by holistic education? ये हम लोग बहुत पहले से भारत में करते भी आ रहे हैं कि holistic education का मतलब है कि the main emphasis should be on character building. The whole personality of the person should be built. Not एक बहुत अच्छा डॉक्टर बन गया. Say for example, I'm just taking an example. Am I clearly audible to all of you? Please confirm. Yes, sir. Okay, fine. So, we have education system और बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर बना दिया. अब आपने सुना होगा हम लोगों ने कि समाज में एक बुराई चलती है कि किडनी बेच दिया किसी ने. जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ओवर हियर. तो बहुत अच्छा डॉक्टर तो बनाया, लेकिन बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग वो नहीं बन पाए, है ना. सो द emphasis of the education is that the education must build character, है ना, enable learners to be ethical, rational, compensate and caring, while at the same time we should prepare them for gainful or fulfillment of the employment. तो सभी चीजों के साथ साथ मेन कैरेक्टर बिल्डिंग पे बहुत जोर होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन का मतलब है कि आप लोग जानते होंगे कि बहुत से बार ऐसा होता है कि हमारे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास किया, लेकिन ही इज नॉट इन ए पोजीशन दैट ही कैन डायरेक्टली बी एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्री, क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं होता है. ही इज नॉट एम्प्लॉयबल, आई मीन टू से. तो इसमें जो एक हमारे पास नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, NSQF जिसको हम कहते हैं, they have identified that when a graduate gets a degree, that graduate should have these kind of skills so that they can easily be employed in the industry. Employable बनाने के लिए उसको स्किल की जरूरत होती है. So हमें वोकेशनल, उसको कहते हैं वोकेशनल एजुकेशन. So complete lack of vertical. अच्छा, तो वोकेशनल एजुकेशन में ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया कि साहब ठीक है, उनको BA में हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे या कुछ स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फिर आगे देखा गया कि अगर वो मास्टर्स करना चाहता है, मान लीजिए एक लड़का बी वॉक का है, बी वॉक का मतलब होता है कि बैचलर्स इन वोकेशनल एजुकेशन, तो अब एम वॉक नहीं था कि अब आगे करना चाहता है, यानी कि लैक ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी फॉर द स्टूडेंट्स वाज लैकिंग. तो हमें प्रोवाइड करना चाहिए कि अगर एक लड़का किसी में इंटरमीडिएट लेवल पे भी उसने वोकेशनल कोर्स किया हुआ है, तो देयर शुड बी अपॉर्चुनिटी कि हायर लेवल यानी ग्रेजुएशन लेवल पर भी वो वोकेशनल कोर्स कर सके, फिर उसके हायर लेवल पर मास्टर लेवल पे भी अपने स्किल को और मजीद अगर ब्रश अप करना चाहता है तो कर सके. दैट प्रोविजन शुड बी देयर, एंड NSQF document has addressed all these issues, and they have designed the syllabi for intermediate level vocational courses, graduation level vocational courses and master level vocational courses, so that whenever a student passes this course, they should have a minimum skill level so that they can directly be employed in the industry. Next is quality academic research. All of us are teacher and we know that we produce a lot of PhD degrees. मैंने आप देखते होंगे कि हर यूनिवर्सिटी में 100, 200, 500 PhD डिग्री आता है. As a whole, in the whole country, thousands of PhD degree are produced every year. लेकिन हो क्या रहा है, हम तो रिसर्च में बहुत देशों से पीछे चलते हैं. यूएस माना जाता है कि बहुत आगे है रिसर्च में. Why it is so? और हम लोग सभी लोग अपना अपना अगर आप असेसमेंट करें तो देखेंगे कि PhD डिग्री मात्र बस PhD डिग्री देने के भर है, या बहुत हुआ तो हम लोगों ने क्या कर लिया कि साथ में 1-2 पेपर पब्लिश कर लिए, वो भी बहुत अच्छे जर्नल में किया, नहीं किया कुछ कर लिया. तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जो रिसर्च है दैट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी. बस एक PhD डिग्री होने तक ये महदूद होकर रह गया है. तो आवर एम्फेसिस शुड बी दैट knowledge creation and research are critical in growing and sustaining a large and vibrant economy, uplifting society and continuously inspiring a nation to achieve even greater heights. आप देखते होंगे कि यूएस हर चीज में आगे है. क्या वजह है? थोड़ा सा कभी आपने एनालाइज किया होगा, पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो उनका ज्यादातर एम्फेसिस जो होता है वो रिसर्च में है. रिसर्च का मतलब है कि सिर्फ हम एक एग्जांपल आपसे लेते हैं कि केमिस्ट्री के जो लोग यहाँ पर जानते होंगे कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एक चीज होता है, जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एक सर्टेन लेवल जिसपे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं, सो एंड सो. वहां पे आप जाइए यूएस में, तो वो सारा डेटा उनके पास है, उनके पास सारे इंफॉर्मेशन हैं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव कंडक्टेड अ लॉट ऑफ रिसर्च, दे हैव आई मीन टू से स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन द रिसर्च, और उनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. सो दैट इज व्हाई उस इंफॉर्मेशन की वजह से अभी हमारे साइंटिस्ट को अगर चाहिए होता है कि इस आइटम का पोटेंशियल क्या है, दे शुड और दे मस्ट कांटेक्ट यूएस पीपल ओवर देयर. वहां से वो उनको वो इंफॉर्मेशन मिलता है, फिर वो उसको अपने रिसर्च में यूज करते हैं, एंड सो एंड सो. सो they are doing some quality research over there, and in such a way
कि वो जो रिसर्च है वो सिर्फ लैब तक महदूद नहीं है, दे आर implementing it, or they are, the society is being I mean to say benefited from all these research directly. तो वो क्या करते हैं, एक सोसाइटी के जो प्रॉब्लम है उस पर लेते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने इजराइल में सुना होगा कि दे हैव डन अ वेरी गुड रिसर्च एंड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में रिसर्च करके वो अब एग्रीकल्चर की उस टेक्नोलॉजी को दे आर एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्रीज के साथ वो कोलैबोरेट करके बता रहे हैं कि साहब हम एग्रीकल्चर का एक रिसर्च टेक्नोलॉजी देंगे जिससे आपकी बने जो यील्ड्स है वो दैट विल इंक्रीज मेनी टाइम्स, मेनी फोल्ड टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमें उस तरह का रिसर्च करना चाहिए, क्वालिटी रिसर्च करना चाहिए जो कि समाज के भी काम आ सके, देश के भी काम आ सके, एंड एज ए होल द ह्यूमन रेस के काम आ सके, कहीं भी हम उसको एक्सपोर्ट कर सके। सो एनईपी डॉक्यूमेंट put emphasis on quality academic research. Many times you might have seen that a very good chunk of our society due to any reason is not educated. वो उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाया, बहुत से किसी कोई स्कूल नहीं जा पाया, कोई बहुत छोटे अवस्था में काम करने लगे तो उन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, परिवार का बोझ था उस पर, परिवार के लालन पालन का बोझ था, तो देयर मे बी एन नंबर ऑफ रीजंस। तो ये अच्छी बात नहीं है कि एक कंट्री का या एक सोसाइटी का एक लार्जर चंक जो है अनएजुकेटेड रह जाए, उसको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल पाए। या कभी कभी ऐसा होता है अनदर केस कि सिर्फ एग्जांपल कि हमारे यहाँ कम उम्र में लड़कियों की शादी हो गई, शादी होने के बाद वो परिवार की व्यवस्था में लग गई, वो आगे का एजुकेशन पूरा नहीं कर पाए। बाद में पता चला कि जब फैमिली सेटल कर गई है, बच्चे बड़े हो गए, अब वो आगे पढ़ना चाहती है, तो फॉर्मल एजुकेशन में उसके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि फॉर्मल एजुकेशन एक सिस्टम है कि आपकी आयु जो है 26 साल से कम होनी चाहिए, एंड सो। तो अब वो कैसे अपना एजुकेशन पूरा करे, उसके लिए there is provision under the system of adult education and lifelong learning. So we should make such kind of system which includes these leftover people of the society. We should include these leftover people of the society into the formal education system, कि वो भी educate हो सके, and so that हमने बताया जब वो educated होंगे तो certainly they will contribute to the growth of the society. So in many cases quality adult education could thereby conducted in, अब उसके कैसे conduct करेंगे उसको हम लोग अभी हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन ये फेनोमेना है कि एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग की प्रोविजंस होने चाहिए सो दैट कि सोसाइटी का वो वर्ग जो किसी वजह से उसकी एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो गई हो या एजुकेशन नहीं हो पाया हो, वो उनको एजुकेट किया जा सके सो दैट दे कैन बी included in the mainstream of the society. Another very important thing which NEP emphasizes is that online and digital education. ऑनलाइन एंड डिजिटलाइजेशन जो है ये क्या करता है आपको कि इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एक्सेस टू क्वालिटी। अपने कॉलेज की बात करते हैं, बहुत से लोग अभी डिग्री कॉलेज में आ रहे हो, आप मान लीजिए फिजिक्स की बात करते हैं और क्वांटम फिजिक्स पढ़ाना हो, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप वहां पर देखेंगे कि क्वांटम फिजिक्स का एक्सपर्टीज नहीं है, आपके पास वो टीचर नहीं है जो क्वांटम फिजिक्स में एक्सपर्टीज रखते हो, तो आप क्या करेंगे, दो चीजें हैं, चाहे तो बच्चा क्वांटम फिजिक्स ना पढ़े या हम थोड़ी बहुत चीजें पढ़ा करके उसको पढ़ा दिया, तो वो दैट विल नॉट बी द क्वालिटी एजुकेशन। दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या है कि वहां क्वांटम फिजिक्स के बहुत एक्सपर्ट टीचर्स हैं एंड द स्टूडेंट्स आर बीइंग गिवन क्वालिटी एजुकेशन ओवर देयर, और बहुत ट्रेंड हो गए वो क्वांटम फिजिक्स में। तो अब हमारा लड़का जो क्वांटम फिजिक्स नहीं पढ़ पाया ड्यू टू द लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन द क्वांटम फिजिक्स, ये लड़का और एक लड़का जो क्वांटम फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है, ये दोनों आपस में कंपीट नहीं कर पाएंगे, देयर विल बी द डिस्पैरिटी इन द एजुकेशन सिस्टम। इस डिस्पैरिटी को कैसे खत्म करें कि सभी लड़कों को, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री शुड गेट द क्वालिटी एजुकेशन और मस्ट हैव एक्सेस टू द क्वालिटी एजुकेशन। ये कैसे कर सकते हैं, एंड दैट इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन। तो से फॉर एग्जांपल कि आईटी में क्वांटम फिजिक्स के बहुत एक्सपर्ट टीचर हैं, तो हम ऑनलाइन एजुकेशन से क्या करेंगे, क्वांटम फिजिक्स पे कोर्स बनाया एंड वी विल फ्लोट टू द होल कंट्री। अब हमने नेट पे रख दिया, से फॉर एग्जांपल स्वयं पे रख दिया, अब स्वयं जो है इज एक्सेसिबल टू एवरीबॉडी। तो अब लड़का वो डिग्री कॉलेज का हो, रूरल एरिया का हो, गांव का हो, शहर का हो, कहीं का भी हो, और जहां पर ये सुविधा नहीं है वो डायरेक्टली ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू उस कोर्स को कर सकता है, एंड ऑल द स्टूडेंट शुड गेट the same quality of education. The same IT professor is teaching to all students of the country वो पढ़ा रहे हैं, तो same standard सबको मिलेगा. So this can be achieved with the help of online and digital education. We will discuss it in the latter part of our lecture. So NEP emphasizes on online and digital education as well. अब इतना करने के बाद, emphasis किस चीज पे है वो देखने के बाद कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस दिए एनईपी ने। सो व्हाट आर दीज पॉलिसी रिकमेंडेशन? तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि
पॉलिसी एजुकेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन एजुकेशन है। दिस इज ऑनलाइन एजुकेशन को कैसे आप करेंगे। So given the emergence of digital technologies and emerging importance of leveraging technology for teaching learning process at all levels from school to higher education, this policy is the following। तो बोला कि ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत इंफेसिस होना चाहिए और उसके लिए कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन है। सबसे पहला कहा कि वी शुड स्टार्ट पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। बहुत से लोग हम लोग ऐसे हैं कि शुरू में जब ऑनलाइन एजुकेशन आया तो हम लोगों ने कहना शुरू किया ठीक है साहब ऑनलाइन एजुकेशन तो है। पहले तो मेरे मन में एप्रीहेंशन ये आया कि ये लोग क्या करेंगे, सब ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ाना शुरू कर देंगे, टीचर की पोस्ट खत्म होने लगेगी और टीचर की महत्व कम हो जाएगा या उसकी जरूरत कम रहेगी। अब जो रिटायर होता जाएगा नए रिक्वायरमेंट्स नहीं होंगे और ये ऑनलाइन एजुकेशन नहीं, ऐसा नहीं है। Online education is not going to replace the teachers who are teaching the students in the face-to-face mode. They can only supplement to the face-to-face teaching. They are not going to replace the face-to-face mode of teaching. ठीक है, तो ये apprehension नहीं होना चाहिए किसी के दिमाग में। दूसरी बात ये है कि पायलट स्टडीज हमें शुरू करना चाहिए फॉर ऑनलाइन एजुकेशन। किससे? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि हमारे कॉलेज में मान लीजिए कि क्वांटम फिजिक्स का एक्सपर्टीज नहीं है, तो ठीक है, हमने अपने स्टूडेंट को कहा कि क्वांटम फिजिक्स का कोर्स एक चल रहा है, एक आईटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने स्वयं पे कोर्स रखा हुआ है, एनपीटीईएल का कोर्स है, यू कैन ज्वाइन इट एंड तो इस तरह का हमें करके देखना चाहिए कि उसके कितने फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहा, नहीं हो रहा, हाउ वी कैन एक्सेस ऑल दीज इंफॉर्मेशन, हमारे स्टूडेंट कितने कंफर्टेबल हैं इस मोड में, एक स्टार्ट करना चाहिए सो दैट जब भी आप किसी नए सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो you will be able to find out what are the lacunas in the system, what are the benefit of these systems, so that if something is lacking in the system we can further improve it। इस तरह से हम लोग आगे देख सकते हैं। For accessing the information in the online education we must have the appropriate digital infrastructure। अभी जैसे कि हम लोग अभी ऑनलाइन मोड में सब लोग जुड़े हुए हैं और क्लास कर रहे हैं, तो आपके पास रिक्विजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके पास चाहे तो मोबाइल फोन होगा जिसमें नेट की फैसिलिटी होगी, उसके थ्रू गूगल मीट के थ्रू हम लोग एक दूसरे से भी बातचीत कर रहे हैं या जुड़े हुए हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी ऑल अक्रॉस द कंट्री है या नहीं। मान लीजिए कि एक रूरल एरिया का आदमी है, वहां नेटवर्क ही नहीं पहुंचता है, तो अब नेटवर्क ही जब नहीं पहुंचेगा तो फिर वो ऑनलाइन एजुकेशन वहां पर सफल नहीं हो पाएगा। तो ऑनलाइन एजुकेशन नेटवर्क ही नहीं है, तो नेटवर्क जब नहीं है तो वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, जब कनेक्ट नहीं हो पाएगा, कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, तो हमें देखना पड़ेगा, we will have to ensure or the government must ensure that digital infrastructure is available for education। Further, online teaching platforms and tools, another thing is that we must have online teaching platforms and tools। जैसे कि अभी मैंने एक नाम लिया था आपसे कि स्वयं का एक नाम लिया था अभी हमने ना, तो स्वयं क्या है, एक प्लेटफॉर्म है where we can find a lot of online courses, जिसको हम लोग MOOCs भी कहते हैं, massive open online courses are available on the Swim platform, so that the student can go over there, they can find out what are the courses of their interest. If they find that these are the courses of my interest which I can do from the online mode, they can register in these courses, and all such courses are offered in the online mode free of cost for the student। उसमें कोई पैसा सर नहीं लगता है। तो ऑनलाइन टीचिंग का प्लेटफॉर्म, वन प्लेटफॉर्म इज देयर, I have told you that Swim is there. There are a lot of platforms. Udemy के नाम से प्लेटफॉर्म्स है, edX के नाम से प्लेटफॉर्म है, Coursera के नाम से प्लेटफॉर्म है। So there must be a teaching platform and tools over there. Content creation, digital repository and dissemination should be there। ठीक है साहब, आपने एक प्लेटफॉर्म तो रखा है, स्वयं नाम का प्लेटफॉर्म है, but who will create the content? Who will create the course? Who will develop the course? It is the teacher who will develop the course। तो आप देखेंगे, अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो दिखा भी दूंगा कि स्वयं में कैसे होता है, कैसे डेवलप करते हैं कोर्स को। तो कोर्स में क्या होता है सर कि उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, द प्रोफेसर इज देयर एंड ही इज डिलीवरिंग द लेक्चर, एंड after delivering the lecture he is asking some questions over there, and there is provision for clearing of doubts of the students and everything is there। The important thing is that who is going to create that lecture, who is going to create the video lecture, who will create the contents, I mean to say, जो पढ़ाना है आपको वो वीडियो लेक्चर कौन क्रिएट करेगा, है ना। अच्छा, क्रिएट कर दिया तो कहाँ आप रखेंगे उसको, देयर मस्ट बी डिजिटल रिपोजिटरी फॉर दैट। रख भी दिया आपने तो कैसे डिसेमिनेट करेंगे कि सो दैट इट रीचेस टू द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो देयर मस्ट बी अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट। मैंने आपको बताया उसके लिए एक स्वयं प्लेटफॉर्म है। तो प्लेटफॉर्म एक डाइनिंग टेबल है, समझिए एक तरह, जहां पर खाना रखा जाता है, परोसा जाता है, लेकिन खाना बनाने वाला कोई होना चाहिए। देयर मस्ट बी सम पीपल हु इज कुकिंग द फूड, है ना, उसी को कंटेंट क्रिएट करने वाला होना चाहिए। एंड हु इज द कंटेंट क्रिएटर? इट इज द टीचर हु क्रिएट्स द कंटेंट। तो हमें और आपको क्या कि वी बेटर नो व्हाट वी हैव टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है हम जानते हैं, लेकिन सर आप बोलिएगा कि वीडियो बनाओ, ये करो, तो ये सब तो हम लोग टीचर में ट्रेन नहीं हुए हैं। तो इसी के लिए सब ट्रेनिंग का प्रोविजन है कि थोड़ा बहुत ट्रेनिंग आपको दी जाए तो आप भी कंटेंट क्रिएट कर सकें विद द हेल्प ऑफ
technical. Not audible. Not audible. Load yourself. Not audible. Sir, not audible. सर डिस्कनेक्ट हो गया लगता है Hello, sir. Hello, sir. Hello, sir. हेलो हेलो Sir, you are not audible, sir. You are not audible. Please wait. I think technical issues from the resource person side. Sir, you are not audible and no sound.
Hello. Sound is not available, sir. Arrive sir is disconnected. Not approved, sir. अरे नवनाथ सर टेक्निकल इशू है शायद. हाँ टेक्निकल इशू होने के कारण शायद डिस्कनेक्टेड हो गए सर अभी. I have informed the HRDC. Let us wait for a few minutes and see. ओके सर. अच्छा कोई ठीक चाल मैंने क्या शायद dear good morning participants. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. रिसोर्स पर्सन का कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया है, नेटवर्क चला गया है, तो अभी वो ही ज्वाइनिंग. ओके सर. ओके सर. अभी नहीं, अभी आ नहीं सकता, अभी आधा घंटा में तब बता देना. पहले सब नई रिपोर्ट आई है, उसमें प्लेटलेट्स ज्यादा बढ़ा है.